Hello and welcome to my YouTube channel Apex English Language. Today I am going to discuss one of the very important basic concepts of English language, that is will be able to, shall be able to. When we use will be able to, it means we are talking about our efficiency. हिंदी के सेंटेंस में जब लास्ट में पाऊंगा, सकूंगा या पाएंगी, सकेगी, पाएंगे, सकेंगे इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो तब हम will be able to, shall be able to का यूज करते हैं. There are 4 types of sentences. 1 A means affirmative. We will discuss the formation in detail. I will tell you all the parts of the sentences, and first of all we will discuss affirmative. In the beginning we will put here subject, after that will oblique shall, any one of these 2 words, plus be able to, plus we first, plus object. In case of negative, we will put in the beginning subject, then will oblique shall, any one of these 2 words, plus not, plus be able to, plus we first, plus object. I, it means interrogative. In the beginning, we will put here will oblique shall, then subject plus be able to plus we first plus object. I plus N, it means interrogative plus negative. In the beginning, we will put here will oblique shall plus subject plus not plus be able to plus be first plus object. This is all about the formation of all categories like A means affirmative, I means interrogative, N means negative, and I plus N, it means interrogative plus negative. Here we will give you example of each category. Now first one, I shall be able to qualify bank exam. मैं बैंक के एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा. One more example I can give you. She will be able to obtain more than 80% marks in 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. वह 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में 80% से ज़्यादा मार्क्स ला पाएगी. ऑब्टेन करना मीन्स प्राप्त करना. सेकेंड, ही विल नॉट बी एबल टू रन फास्ट. वह तेज नहीं दौड़ पाएगा. वन मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू. दे विल नॉट बी एबल टू विन फाइनल मैच ऑफ क्रिकेट सीरीज. वे क्रिकेट सीरीज का फाइनल मैच नहीं जीत पाएंगे. थर्ड, विल दे बी एबल टू हेल्प द नीडी पीपल. क्या वे जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाएंगे. वन मोर एग्जाम्पल, विल द पीएम ऑफ इंडिया बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स. क्या भारत के प्रधानमंत्री फार्मर्स की समस्या को सॉल्व कर पाएंगे. फोर्थ, विल यू नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. क्या आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे. वन मोर एग्जाम्पल, विल शी नॉट बी एबल टू परचेज वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. क्या वह मार्केट से सब्जी नहीं खरीद पाएगी. So these are some examples from my side. If you watch our video regularly, definitely you will be able to speak fluently, because we have discussed so many important concepts in our previous videos. If you watch our videos, definitely you will come to know about the different concepts, and you will be able to translate different type of sentences on your own. I think it will help you a lot. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you. That's all.